And usme bhi, as you can see, I have written the unit profit here. Okay. So like 1 unit of pro model gives a profit of 182, and 1 unit of mini model gives a profit of 139. Okay. So basically your objective function is going to be something like 182x1 plus 139x2, which has to be maximized. Fine. Now, there are three constraints. One is regarding the labor, the other is regarding the chipsets being used there, and the third one is regarding the electronic components along with the chipsets. Okay. So 1 unit of the pro model requires 6 hours of labor, and 1 unit of mini requires 9 hours of labor, and the total labor available to me is 7,000 hours. And this has to be less than or equal to. Okay. So similarly, chipsets is 1 unit each. So, and the maximum that are available in a day is 10,000. And these are the electronics. So you can see all the three constraints are less than or equal to types. Okay. So basically your first constraint is 6x1 plus 9x2 less than or equal to 7,000. Then 1x1 plus x2 less than or equal to 10,000, and 15x1 plus 10x2 less than or equal to 14,000. Is that right? हाँ, ये प्रॉब्लम तो समझ आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, what we do is, in the solver, now when you click on the data, you will be able to, I mean, how are you getting the solver? By clicking on data only, na? Yes, ma'am. Right. So let me remove this. I'm not solving graphically, so I don't need it. Somehow this is creating a problem. Okay. Right. Now, what in solver, what is required is we have to sort of give formulas. Okay. So as you can see, I have created another column here in which I'm writing used. So basically, this is going to be my utilizations. Okay, or the slacks or whatever you want to call it, because here in these columns of used cells which I'm writing, we are going to give the formula. Okay, अब formula कैसे देते हैं? See, what it does is, like I have written 00 because this is what I need to find, right? So normally what we do is, if you start with any number here, right, you have to give a formula, in the sense that what exactly are we, see, if x1 is 1, x2 is 1, right? So how much is going to be the left hand side? 6x1 plus 9x2, right? So this will be my used utilization, utilization, and this is actually not utilized. These are actually my availabilities. Okay, na? So I will not say utilized. This is utilized. How much are how much am I using? So in this, Excel has an inbuilt formula. So one way is you write down the formula, right? It could be write B6 into B2 plus C6 into C2, and you get the formula, right? But then Excel also has a inbuilt formula called as sum product. Okay, so I'll write it for you again. What you can do is you can use the sum product when you write. So what you can do is select the cells here, because this is what we are going to start with. Okay. And then along with it, we are going to have this. क्योंकि first utilization तो यहीं से ही आएगा, right? So you can select and enter. So you'll get the values. Are you getting my point? If you want this to be fixed, I think ये इतना Excel आता है ना. I think if you add the dollar sign, then this cell gets fixed. So everywhere they will be retained as this. You won't have to change them. ठीक है? यहाँ से आ गया. Now if you copy it, it will be, the answer will be this only. Are you getting the point? Huh?
Similarly here also. Now this will be my profit. So if I'm just making 1 unit of pro and 1 unit of mini, then this is going to be my total profit, right? So as I was saying, one way is, okay, we can go ahead, start with this, keep on changing the values, and you can see you'll get different answers here. But then this is not the purpose, okay? So what we do is we start with 0 only, because this is what we want. So we'll start with 0. That will be my initial thing, right? Now what you do is you click on solver. Okay, so this is where my total profit needs to come, and this has to be maximized. Okay, so when you click on solver, this is your objective function, this cell itself, right? So it gets automatically fixed, right? So this has to be maximized, right? So this is what your objective function would set as. Then you have to maximize it. Now it says by changing which cells. See, as I said, we were writing the values here because these are your decision variables, right? B2, C2, they are your decision variables. So we are going to change them. And accordingly, we are to reach a situation where our objective function is maximized, but at the same times, the constraints are satisfied. That means none of the values in the cells D6, D7, D8, they do never exceed the right hand side, because we want the constraints to be always less than or at the most equal to, right? So by changing the variable cells is this. Okay, now for the constraints, what you can do is, subject to this constraints, we need this to be less than or equal to this. So this is what it is doing. So what you can do is, एक मिनट मैं इसको हटा ही देती हूँ. Say if you, I've already written add. So when what you can do is just click on the add there and you will get a cell reference, right? So cell reference is this, the used cells, okay? And constraints are going to be these values, the right hand sides. Are you getting the point? And then we click on okay. So वो दो बार ही आ गया, right? So delete हो गया अब, ठीक है? Now, this, as you can see, you have make unconstrained variables non-negative. So non-negativity restriction is somewhat inbuilt here. Okay. So we'll just click on that, right? Now you have to select a solving method. So here, there are three of them. We choose the simplex linear programming and then we solve. Okay. Now, when you solve, you are going to get a dialog box like this. Now, in the answer, of course, we have to keep the solver solution, but then we also have to have the reports with us, which are going to give us the answer as well as the sensitivity analysis as well as the limits. Okay. So once you click on this, okay, you can see here that three sheets are automatically generated. First of all, you get the answer here in the sense that you must produce 747 units of Pro, 280 units of Mini to get a maximum profit of this. Now, as you can see from here, the labor, this is what you are using, 7,000. So labor is completely utilized. But chipsets, you are not using much, right? Then electronic components, we are using completely. So it's okay. That means this particular input is actually a unutilized input. We have more, but we are actually using less for the maximum profit. So we don't need that, right? Now, as you can see from here, now these were the ones that I had already solved. So now I'll start from here. So once you, are you people doing it simultaneously? Huh? या अभी सुन रहे हो सिर्फ? Yes, ma'am, we are not doing it. You're Yes, not ma'am. doing it. Okay. So you won't have got this.
these sheets with you. Koi baat nahi, we'll do it gradually. Or if you want, you can do it till this stage, because then I'll explain the reports. Do the same values. I'm just keeping the sheet open. I- what you have to do is just use this formula for some product. And then firstly we need to enter all these data Yeah, enter. values. Yeah. Do till this stage, then I'll explain the answer reports and all the files along with those have been generated. पहले इतना खुद कर लो. Okay. Okay, ma'am.
हो पा रहा है? उसके बाद एक एक्सरसाइज का भी कर लेंगे. I wanted to take something with more number of constraints. मैम जब सम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रो एंड मिनी वाला जो सेल है वो सेलेक्ट करके सम प्रोडक्ट तो लिख दिया, उसके बाद एंट्रीज अपनी खुद से डालनी है सेल की, सेल के कौन से नेम। सेल की? कौन से? मैम ऊपर जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो सम प्रोडक्ट तो आ जाता है, उसके बाद जो सेल का नेम है वो खुद से डालना पड़ेगा। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बेटा, वो ये तो हमें देना पड़ेगा ना, सी मतलब कि कौन से सेल को चूज़ करेंगे, उसमें तो वो तो करना ही पड़ेगा। ये देखो, ये फ़ॉर्मूला डलेगा ना, सम प्रोडक्ट, और जो पहले जो पहले एरे आता है फ़ॉर्मूला बार में, वो होगा, इट्स लाइक यू नीड द प्रोडक्ट ऑफ B2 B6, यही चाहिए ना हमें? यस मैम। 6x1, ठीक है? तो ये B2 और ये B6, बीच में कॉमा है। तो ये इट इट टेक्स लाइक एन अरे, राइट? सो B2 C2, अगर 3 वेरिएबल्स होते तो ये भी होता, यस मैम। ठीक है? तो ये एक अरे आ जाएगा, कॉमा जो दूसरा अरे आएगा, यस मैम। ठीक है? इसको रहने दो, मैं इनको डिलीट ही कर रही हूँ एक्चुअली। Because actually I was trying to solve graphically also using Excel. But we are only bothered about this. Okay? मैं फिर से लिखूं क्या तुम लोग के लिए? If you are doing it with me. हाँ? यस मैम, फिर से करा दीजिए।
The same problem, or shall we take up another problem? Ma'am, we can do the same problem. Same problem. So I'm writing again. See, this is how you have to write. Okay, now I'll write, instead of pro and money, I can write x1, x2. Okay. Now these are the values or variables, the values of the variables that we're जो हमने लिखा numbers to make, right? Then I need inputs here, right? So inputs, I have how many constraints? 3. So I'll write them as C1, C2 and C3. अब साथ साथ कर रहे हो? Yes, ma'am. Now the first, uh, okay. Initially I am just giving the values one each, okay? Simply because I want to, bring in the formula. उसको बाद में हम zero कर देंगे. One भी रखोगे तो भी कोई issue नहीं है उसमें, ठीक है? C1 was 6, 9, right? Then I leave a column blank because I have to insert a formula there, and then it has to be less than or equal to, say, 7,000. So basically, these will be my utilizations, and this is my availability. Is it okay now? Right. The second constraint was 1, 1, again, less than or equal to 10,000, right? And the third one will be 15, 10, again, less than or equal to 14,000. Oh, sorry. मैंने गलती कर दी. This will be less than or equal to 14,000. ठीक है? यहाँ आ गया, right? And then I am talking of unit profit here, which was 182, 139, right? 1 minute. I need another row. So I'm writing here total profit. यहाँ नहीं, यहीं आएगा. इस सेल में. आई थिंक यहाँ मैं ऑलरेडी कोई फॉर्मूला डाल चुकी थी, शायद उस वजह से हो रहा है. ओके, नाउ आई हैव टू राइट द वैल्यूज हियर. ठीक है ना? So now I'll say equal sum product. Now when you click on this, you get an option to select. Okay. So the first array I select is these two sets, B18, C18. Is that okay? Huh? And then with a comma, I select the other ones. As you can see, the color changes. Now I return it. So now if you copy, see, if you copy directly, what will happen is that this will change B19, C19. ठीक है ना? तो इसीलिए इसको हम कॉपी नहीं करने के लिए what you can do is you can put a dollar sign in the initial cells. See, what dollar sign does is it fixes the cells. It doesn't change when you copy. This is the benefit of adding a dollar sign. So what happens is that when you copy this formula here, so as you can see, these cells are fixed, 18, and automatically it moves over to the next one, right? So copy it here, and here also when you say, you get this. Here also it can be copied, but I've written something here. So what I'll have to do is do a little extra exercise and remove them, and then this is my total profit. Is it okay now?
हम्म, बोलो, हो रहा है इतना कि नहीं? यस मैम। हाँ जी, बाकी लोग जो कर रहे हो। यस मैम। यस मैम। हैं बेटा? यस मैम, हो रहा है। हो रहा है ना? इतना हो गया? ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। द थिंग इज कि अब जब तुम अपना सॉल्वर खोलोगे ना, अच्छा अभी चलो कर्सर मैं कहीं और ही रखती हूँ, लेट अस ओपन आवर सॉल्वर। ठीक है, अभी तो इसने यही सेल लिया, आई डोंट वांट दिस। अब मेरे को तो अपना वैल्यू यहाँ पे डालना है ना, मैं सब कुछ हटा रही हूँ, अब ऐसे कर लेते हैं, चलो आई विल फिल इन अगेन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तुम्हारे पास ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है ना? सॉल्वर खोलने पे ये विंडो आ रही है ऐसी या सिमिलर सी, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्जन ऑल्सो, you may यस have मैम। something different. ठीक है, but you'll be getting something like this only. So when you set the objective, you have to set in that cell which is giving you the optimal value of the objective function, क्योंकि जिसको मैक्सिमाइज करना है। तो वो इस केस में हमारा कौन सा सेल है? ये वाला, जिसमें हम टोटल प्रॉफिट लिख रहे हैं, यहीं पे आ रहा है ना हमारा। अब अगर हम इसको x1 को मैं 2 लिखती हूँ और x2 को 2 लिखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ वैल्यूज चेंज होंगी, right? So I'm going to maximize this cell only where I'm actually writing my total profit. Is this okay? उसको सेलेक्ट कर लो बस, और कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? टू मैक्सिमाइज। यू कैन चूज, इफ इट्स अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम यू कैन चूज मिनिमाइजेशन, बट आर्स इज अ मैक्सिमाइजेशन, सो आई चूज मैक्सिमाइजिंग। ओके, नाउ इट सेज बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। अब वेरिएबल सेल्स का मतलब क्या हुआ? यही तो है हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज जहां पे हम डाल रहे हैं। मेरा x1 कितना हो, x2 कितना हो, कब? जब मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। यही तो चाहिए हमें, इसी को ही तो निकालना है। इनको चेंज, क्योंकि हमने सम प्रोडक्ट भी तो यहीं से लिया है। टोटल प्रॉफिट आया कहां से है? 182, दिस वाज इट ना। B18 इंटू B26 प्लस C18 इंटू C26। तो अब B26 एंड C26 आर फिक्स्ड, क्योंकि ये तो हमारे यूनिट प्रॉफिट्स हैं। हम चेंज किसको कर सकते हैं? B18 एंड C18 को। सो बाय we'll choose these two cells जिनको हम चेंज कर रहे हैं। यही अगर x1 x2 x3 होता तो 3 आ जाते, x4 होता 4 आ जाते। इज दिस ओके? हाँ या नहीं? यस मैम। Right. Now we come to the constraints, subject to the constraints. अब इसमें constraints में हमें add करना है. So we'll click on add. अब जैसे ही तुम add पे करोगे वो पूछेगा। अब जैसे मेरे में तो अलग विंडो पॉपअप हो गई, कई बारी उसी में ही आ रहा है। In some versions, the cell reference comes there only, main cell में। तुम लोग का कैसे आ रहा है? अपना अपना देखो। अब सेल रेफरेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये जो यूज्ड वाले जितना कॉलम थे, जितने कॉन्स्ट्रेंट्स थे उतने सेल्स आ गए हमारे पास। 3 कॉन्स्ट्रेंट्स थे, हमने तीनों के तीनों चूज कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे, अभी तो देखो हमारे सारे लेस देन और इक्वल टू टाइप्स थे, इसलिए हमने सबको लेस देन और इक्वल टू किया। ठीक है, अब अगर कोई एक मोर देन हो, एक लेस देन हो, तो उसको हम अलग से करेंगे। इसलिए मैं बोल रही थी एक प्रॉब्लम और भी करेंगे। ठीक है, अभी हमारे तीनों के तीनों लेस देन और इक्वल टू थे, इसीलिए हमने तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। और कॉन्स्ट्रेंट में जो हमारी बाइंडिंग वैल्यूज हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमने उन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। इज दैट ओके? यस मैम। अब इसको ओके कर दो तो तुम्हारे सारे आ जाएंगे। अब अगर अलग अलग तरह के होंगे ना, तो वो उतनी बारी कॉन्स्ट्रेंट लिखा हुआ आएगा। आई थिंक आई विल डू वन प्रॉब्लम जिसमें मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स हो, लेस देन बी और ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब as I said, is this box would be unmarked with you all because you're starting with it. So that is why there is no need to add the non-negativity restrictions here.
because it is making the unconstrained variables as non-negative only. तो इसको टिक कर दो बस कि we are including the non-negativity restrictions. We don't have to write them separately. Okay? अब हम नॉन लीनियर नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दी सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग. यहाँ पे ये चूज करना पड़ेगा बिकॉज इट गिव्स 3 ऑप्शंस. तो वील बी चूजिंग द सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मॉडल. इतना हो गया सबका? Yes, ma'am. Right. Now you solve. So you are getting a window like this. आ रही है? Yes, ma'am. Right. Now, in the reports, because we want all the reports, we just don't want a solution. We want the reports also. So we'll select the answer, the sensitivity, as well as the limits. इन तीनों को select करना पड़ेगा. ठीक है? अब इसको OK कर दो. अब देखो हुआ क्या. मैंने फॉर्मेट नहीं किए थे ये वाले सेल्स, तो इसने मेरे को इंटीजर वैल्यू नहीं दिया. ठीक है? अगर मैं इन्हीं को ही फॉर्मेट कर दोगे तो इसने मेरे को ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके दे दिया था 747, और ये वाला वैल्यू भी राउंड ऑफ हो गया था. ठीक है? अदर और ये वाला वैल्यू भी हमारे पास राउंड ऑफ होके आया था 1027. सो बिकॉज वी आर डूइंग, आई मीन we cannot be producing 746.67 units of the pro model, so they have to be rounded off. So you can format the cells to numbers before starting the problem. वो भी कर सकते हो. हाँ जी, हो गया अब? Yes, ma'am. ग्रेट. अब तुम्हारे ये क्लिक होते ही 3 शीट्स जनरेट हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ. मैम हो गई. हो गई ना? नाउ ओपन द आंसर रिपोर्ट वाली शीट पहले. ठीक है? आ गई? अब देखो, दिस इज गिविंग यू एवरीथिंग. हाँ, कि हमने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट कब क्रिएट हुई. ठीक है? सॉल्वर, देन इवन लाइक इफ यू हैव एन इनफीजिबल प्रॉब्लम तो उसमें आ जाएगा कि सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ. देन वेदर ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस वर सेटिस्फाइड और नॉट. Then the solution time was these many seconds, only 2 iterations, and this was the precision and so on so forth. ये तो general हुई. ठीक है? Now look at this first table. ठीक है? हमारा ऑब्जेक्टिव सेल मैक्सिमाइज जिसमें हो रहा था वो सेल का नंबर आया. ठीक है? यूनिट टोटल प्रॉफिट, सी ओरिजिनल वैल्यू हमने 321 से स्टार्ट करी थी, माइंड यू. मैंने कहा था ना 11 से हम शुरू कर रहे हैं. ठीक है? तो आप 0 से भी कर सकते थे, तो उस केस में ओरिजिनल वैल्यू 0 आता. राइट? एंड फाइनल वैल्यू क्योंकि अनफॉर्मेटेड था तो डेसिमल में दे रहा है. ठीक है? अदरवाइज ये देगा. सो इट गिव्स यू अ मूवमेंट, यू नो, फ्रॉम विच वैल्यू टू विच वैल्यू. तो नॉर्मली जब हम करते भी हैं इनिशियली, बेसिक इनिशियल जब हम सिंप्लेक्स आइट्रेशन भी करते हैं तो हमारा ओरिजिनल इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में तो मैक्सिमम z 0 ही होता है ना, because we start with 0 0, right? You can start with 1 1, you can start with any number and you get the final value, the maximum value, right? Then it talks of the variable cells. हमारे पास 2 variables थे, x1 x2. ठीक है? जिनका ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या लिया था 1 1, राइट? ये B18 C18 में थे ना इनकी वैल्यूज, राइट? उसके बाद फाइनल वैल्यूज क्या आई, ये. Now they happen to be continuous. See, वो देगा कि इंटीजर कंटिन्यूअस है, but then we are interested in discrete values because हम डिसीजन वेरिएबल्स हैं. ये हम 746.67 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, so it has to be 747. But then actually x1 and x2 are continuous variables, so that is why it gives the continuous here. Okay, now these are the 3 constraint cells जो हमारे पास थे, कि तीनों के तीनों constraints हमारे used, जो used column में जो values थी.
ठीक है, ये आई उनकी सेल वैल्यूज, राइट, और क्या थे, लेस देन और इक्वल टू। नाउ देखो, अब जो रिसोर्स कंप्लीटली यूटिलाइज हो गई, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कंप्लीटली यूटिलाइज हुई थी ना, हमारा 7,000 था, राइट हैंड साइड भी 7,000 था, थर्ड में हमारा यूज्ड भी 14,000 आया और राइट हैंड साइड भी 14,000 था। तो ये दोनों कॉन्स्टेंट्स तो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गए, तो इसका मतलब इनकी स्लैक वेरिएबल की तो वैल्यू हो गई जीरो, कुछ बचा ही नहीं इनमें, राइट। बट द सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑफ चिपसेट्स was not utilized, तो इसीलिए इट इज नॉट बाइंडिंग, उसका स्टेटस है, राइट। एंड दिस इज द स्लैकनेस, because the right hand side was 10,000, this was the used value, so 10,000 minus this value is your slackness in that variable. This is your answer report. Is this clear? Yes, ma'am. Right, then come to the sensitivity report. अब sensitivity हमने पढ़ी थी ना, कि हम देखो हमने दो तरह की पढ़ी थी सेंसिटिविटी, कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को कितना चेंज करें so that this optimal solution does not change. That was one part. The second part was कि हम अपने resources constraints की right hand side को कितना change कर सकते हैं so that the optimal solution does not change. यही था ना हमारा, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या कर रहा है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, this is with regard to the objective function. Okay, देखो ये हमारी फाइनल वैल्यू आई 747, इसको 747 ही मानेंगे, एंड 280, ठीक है। रिड्यूस्ड कॉस्ट कुछ नहीं थी क्योंकि हमारी ऑप्टिमल सोल्यूशन आई। अब इनिशियली प्रॉब्लम में हमारे कोफिशिएंट्स क्या क्या थे, 182 एंड 139, ठीक है। Now it is giving us allowable increase and allowable decrease. मतलब कि we can, for the variable x1 which was the pro model, the unit profit, if it increases to 182 plus 26.5, ठीक है, उतना जा सकता है, और even if it decreases but within the range of 182 minus 89.33, तो ये हमारे जो जैसे हमने उसमें निकाला था ना, C1 की रेंज आ गई, you know, 182 plus and 182 minus, right? If the per unit profit on the pro model varies between these two values, the the optimal solution is not going to change. Okay, similarly here also it can go up till that. Okay, so for the variable x2, which is a big variation here, right? Now these are with regard to the right hand sides. ठीक है, अब राइट हैंड साइड में एज यू कैन सी हमारी फाइनल फर्स्ट कॉन्स्टेंट कौन सा था, लेबर, ठीक है, 7,000, राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट भी 7,000 था, बट इट इज गिविंग अस अलाउएबल इंक्रीज एंड अलाउएबल डिक्रीज, कि हम अपनी लेबर को इतना चेंज कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली C2 में एंड C3 में। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Right. And these are the limits in the sense कि जो हमारे देखो यूनिट टोटल प्रॉफिट था वो मैक्सिमम इतना ही गया, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज ये रही, और मतलब वही लोअर लिमिट अगर हम जीरो रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू 85 है, यू नो, फॉर x1 एंड फॉर x2, एंड अपर लिमिट इज फॉर दिस, the results for this. इसको हम इतना बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, but sensitivity is an important sheet. So answer report as well as the sensitivity report, they are two important sheets. Isn't it interesting? सब कुछ मिल गया एक ही उसमें। I think we still have time, तो एक कर लें mixed constraints का। Yes, ma'am. Okay, I think I'll pick up a new sheet now because वो बहुत ज़्यादा हो चुका है ना? I'll pick up a new sheet. So let's first
format the cells and with मैं वैसे बहुत ही देसी तरीके से करती हूँ, so I don't know. I'm picking up the eighth problem from the exercise. It has 4 constraints and 2 variables, with one constraint more than or equal to type and the other ones less than or equal to types. ठीक है? So I have x1, I have x2, and these are my variables. So I'll start with 1 and 1. Okay. And these are going to be my inputs. दिख रहे हो साथ साथ? Yes, ma'am. I have, as I said, 4 constraints. So I'll be writing them. Then the first constraint is 2x1 plus 3x2. I'll leave a column blank, more than or equal to. Now it's more than or equal to 6. Okay. So these are going to be my used cells and these are going to be my availabilities. Okay. The second constraint is 3x1 minus x2. So it's going to be minus 1, a blank, and then less than or equal to 15. Less than or equal to 15. Okay. Third constraint is minus x1 plus x2. So minus 1 and plus 1 less than or equal to 4. And the fourth constraint is going to be 2x1 plus 5x2 less than or equal to 27. Okay. And मैं अभी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं, ठीक है? मैक्सिमाइजेशन की ही बात करते हैं. यूनिट प्रॉफिट इज, so objective function was to optimize 2x1 plus 3x2. Okay. So here we'll write the total profit. So I'm not writing anything right now. Is that okay? It was optimized. So we'll do both the minimum as well as the maximum. Okay. Now we have to sort of bring in the sum product formula. This one. So I'll write here only $B, $2, $C, and $2, comma. Now I'll write the next array. Sorry. This one, B5, C5, right? And we return, right? And now I'll copy down and then we'll see. So now here we don't want, here we don't want, and here we just return. Okay? हो गया इतना? Yes, ma'am. ठीक है ना? Now we include the solver and we write this one. ठीक है ना? This is sheet 8, D11. Okay. Now we are solving the maximization problem first by changing the variables. These. Now see, I'll add constraints one by one because my first constraint is more than or equal to type. So for the first constraint, I'll just mark these 2 values, right? And then I'll change it to more than or equal to. And for the right hand side, I'll just mark this. Okay. So my first constraint is added.
For the other constraints, I'll now add, but since they are all less than or equal to types now, so I can do that. They are all less than or equal to, so the constraint will be this. Okay. Is this okay now? So you can see you have two different sets of constraints here, because one was more than or equal to and the others were less than or equal to. So we can do them individually also. हो गया? Have you been able to do? Yes, ma'am. Right. Now solve. अब देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया, did I हुआ ही नहीं है, तो इसकी सोल्यूशन नहीं आया. कुछ गड़बड़ करी मैंने, है ना? पहले कुछ गड़बड़ करी थी मैंने. हाँ, अब आया. आ गया? यप. ये तो हम मैनुअली भी सॉल्व कर चुके हैं वैसे ये प्रॉब्लम. आया कि नहीं आया? नहीं आया मैम. क्या दिक्कत आ रही है बताओ? मैम वही जो आपके में आया था ना अभी, हाँ, वही क्योंकि वो मैं क्या पता क्या हुआ था, मैंने जब फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट चूज किया ना, सो आई शुड हैव चोजन ओनली दिस सेल D5. आई थिंक मैंने ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया था. उसको फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट को हटाओ, फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट पे जाके उसको डिलीट कर दो ऐसे, ठीक है? फिर उसको ऐड करने के लिए ऐड करो और सेल रेफरेंस में जस्ट गिव दिस वन सेल D5 और कांस्टेंट का साइन चेंज कर दो मोर देन और इक्वल टू, और कांस्टेंट्स उसमें जस्ट सेलेक्ट वन सेल F5. अब करो. यस मैम हो गया. हो गया ना अब? ठीक है. सो अब देखो, अब सारी रिपोर्ट्स भी आ गई होंगी. सो योर मैक्सिमम Z is 21, x1 6, x2 3 is the optimal solution. And you can see the answer reports जो हमने पहले ली थी. हमने, क्योंकि मैंने वो गलती हो गई थी मेरे से, तो वो शुरू 0 से हुआ, तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू 0 आ रहा है. पहले वाले केस में 1 आया था बिकॉज हमने 1 से शुरू किया था. इसमें देर आर 4 आइट्रेशंस. हाँ, मैंने मैनुअली भी किया तो 4 ही है. हाँ, उसके बाद ये आ गए दो 2 ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स आर नॉट बाइंडिंग एंड 2 ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स आर बाइंडिंग, क्योंकि 2 कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुए. राइट. सिमिलरली यू कैन सी द सेंसिटिविटी रिपोर्ट एंड द लिमिट्स रिपोर्ट जो मैंने पहले समझाए. अब इसी प्रॉब्लम को इंस्टेड ऑफ solving as a maximization problem, supposing I solve it as a minimization problem. ठीक है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना, कॉन्स्ट्रेंट वही है, बट नाउ आई विल मिनिमाइज माय ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक्चुअली तो एक्सरसाइज में ऑप्टिमाइज था ना, तो हम इसको मिनिमाइज भी तो कर सकते हैं. ठीक है ना? तो जैसे ही तुम इसको मिनिमाइजेशन में डाल दोगे, और सिंप्लेक्स एलपी है. अब मैंने सॉल्व किया, मैं फिर से रखती हूँ सॉल्यूशंस अपनी. पता नहीं कितनी सारी शीट्स जनरेट हो गई हैं मेरी, है ना? 5. सो एज यू कैन सी नाउ,
minimization, the minimum value of the objective function is 6 with x1 0, x2 2. And again, you can see now only one of the constraint is completely utilized. Baki sub are unutilized. So as you can see, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा वही. अब ओरिजिनल वैल्यू हमने 21 से शुरू करा था तो उतना कम हुआ. Is it okay? Yes, ma'am. देखो नहीं, यहां से नहीं आएगा. ठीक है, इट्स ओके. अभी इतनी डिटेल में नहीं जाते हम. अभी जितना दिया हुआ है बस वही पढ़ो, बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे. हाँ जी, इज दिस ओके? यस मैम. फाइन. अब हो जाएंगी कुछ एक प्रॉब्लम्स. यस मैम. कौन सी करोगे ये बताओ.